talk, definitely you will understand that he is a long distance runner. When I say long distance runner, मैंने कभी मेरे बारे में बात किया था कि आई रन मैराथन 42.2 किलोमीटर. विजय नायर भाई साहब ने साउथ अफ्रीका में, अगर आपने सुना होगा, द फर्स्ट अल्ट्रा मैराथन व्हिच इज कॉल्ड एज कॉमरेड्स, that is 90 kilometers. He has run that, and he was already preparing for his second attempt there. So a multifaceted personality, a true inspiration to many people, and I'm very sure after this lecture, you definitely will be in the list of his fan following. Over to you, Vijay. Yeah, thanks, Vishu. I mean, you introduced me so generously, you know. कभी कभी मैं खुद सोच रहा था मैंने इतना कुछ किया है. Okay, thanks Vishu. And okay, so my presentation or my talk of 1.5 hours, whatever, 1 hour plus, it is not only if you have to join defense forces. ऐसे कुछ नहीं है, you know. This is for everyone, irrespective of whether you are 10th standard, 12th standard, graduation, whether you are working, not working. This talk would be about the values, you know, what armed forces taught me. So I was with Indian Navy for 10 years, as I said, and Navy has given you everything, you know. After my engineering, I joined in the last year, and then I joined Goa, Naval Academy, Goa. And once I joined academy, and many of you don't know, I was from a very small school. I was from an English medium school, but we hardly used to speak English there. So I'm sure many of you can connect that to me. Many of you can connect to me rather, because बहुत छोटा सा स्कूल था, तो फिर वहाँ इंग्लिश सिर्फ नाम के लिए इंग्लिश मीडियम होता था. So from there, life took a real turn, and then like many of us, all of us were economically also from that straight out society. So when I joined Forge, and then subsequently the Forge training, the armed forces training makes you a different person, you know. So from the day one, they ensure that you join when you are after engineering, that is close to 20 years, 2021. And by the time you pass out of academy after 22 years, you are 22 or 23, you're already a leader, you know. So that is what the armed forces training does to you. तो कभी आप लोग ने अगर वो एक दो मूवी है which I would recommend whenever you have time, lockdown में time होगा तो, there is a movie called Prahar. So watch that movie. So all these movies, what they do is they shows how the training happen in the armed forces. Then there is a movie called Uri, URI. Uri, I'm sure the very latest movie. जब भी time मिले तो listen to or watch that movie and listen to the dialogues and everything. So these are so beautiful. So I had a lot of batchmates who were also lady officers, you know. They were also like when they came to academy, जब वो academy में आए थे तो एकदम normal woman या लड़कियां थी, but when they went out of academy, they were as tough as anybody. So that is the power of Armed Forces Academy. So how you get into academy is after 12th. This is just introduction, so I'm just telling you. If you are in 11th science or 12th science, so you have a chance of joining NDA, joining Armed Forces through NDA, National Defense Academy. And then second option is joining through Indian Naval Academy, INA, and Air Force Academy. So these three are the options for you to join Armed Forces. So once you miss on that bus, अगर आपके पास 12 के बाद नहीं जाना हुआ, so you have an option by going through after graduation. Okay, so graduation के बाद there is something called CDSE exams, Combined Defense Service Exam. So you can be a science graduate, you can be a commerce graduate, you can be an arts graduate, and you can be a any graduate, hotel management, or you name anything, but you should have more than 60% of mark, first class. अगर ये आ जाता है तो you can try the CDSE exams, Combined Defense Service Exam. Okay, so these are the second options where you can join the defense forces. Okay, so
now they have started giving the permanent commission to lady officers also. So if there are girls or ladies who are listening to me, it's one of the best career option you can ever get. So as I say, I have a lot of my lady batchmates. They are commanders and captains in Indian Navy, and they all started out like to be a very humble, ऐसी डरा डरा हुआ लड़कियां, but today they are tigers. So that is the power of academy. So this is how you can join the armed forces, Air Force, Navy, as well as Army. So these three are together, they are called armed forces. Okay. So Navy wear whites, Army wear olive, and Air Force wear blue. Correct. So I was attracted towards white from my college days, and so the goal was very clear. The goal was very, very clear. If Fauji join karna, and so work towards that, and that's how the joining in Navy happened. Correct. So this is how the career goes through. Now I'll tell you about the values, why we are here, and what I want to tell you through 5 stories. I'll be telling you 5 stories. I also conduct a lot of storytelling sessions and a lot of other plans on Instagram live. If you are there on Instagram, you can follow me there. I'll be getting a lot of naval officer, military officers, interview with them in the coming days. Lady officers, rather, my batchmates, they have agreed for interviews, So please, if you're there on Instagram, do follow me. A lot of live interviews will be there on Instagram. So I'll present you 5 story. मैं 5 कहानी बताऊंगा आपको, and take the values from that story. Take the leadership value from that story. Okay, so end of the presentation, I'll ask you कि क्या सीखा है इसमें से. Okay, so are you ready for that stories? Are you ready for that stories? Chat box you तो सब लोग म्यूट Yes, है क्या? sir. हाँ, okay, perfect. So the top. chat box, yeah. So the topic is leadership values through armed forces. Okay. पहला स्टोरी मैं बताऊंगा. The story is of Parle G. Parle G बिस्किट याद है ना सबको? Parle G. So the story is of Parle. प्रेजेंट नाउ कर देना. अभी तेरा चेहरा दिख रहा है, वो स्क्रीन दिखाना है, तो यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर लिंक. अच्छा, एक मिनट. हाँ, just hold on. I will help you. yes. The screen is visible. You can proceed. Can you see my presentation? Yeah. Yes. Yeah. दिख रहा है ना अभी? Yeah, दिख रहा है. Okay. So my first story is about Parle G and Naval Academy. Okay. So all of us know Parle G? हाँ ना? All of us know. Hello. Parle G सुना? Okay. तो मेरे को ऐसे एक आध ने कंफर्म किया तो आई विल बी श्योर दैट यू आर लिसनिंग टू मी करिए. I will do the confirmation part. Okay, perfect. So this story goes, जब हम लोग एकेडमी में थे 1999 जनवरी, बिफोर कारगिल वॉर, and thereafter the Kargil war happened. So I joined academy in January 4th January 1999. अब एकेडमी में कैसे होता है ना, एकेडमी में once you enter academy, आप टाइगर बन के एंटर करते हो. जैसे ही आप एकेडमी ज्वाइन करते हो, आपको लिटरली कुत्ते जैसे बना देते हैं. एंड आई एम टेलिंग यू दिस वेरी ओपनली. दे एंश्योर यू कि आपका पूरा बाल काट देता है, एंड सडनली एवरीथिंग you are made to do running, drilling. You are made to do punishments, push-ups, and left right पूरा कर करके you are reduced to your half. ब्रेकफास्ट का टाइम, खाने का टाइम, एवरीथिंग फिक्स होता है. तो जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हो तो योर ब्रेकफास्ट टाइम इज ओनली 7 minutes, और वो 7 minutes में भी you have to eat with your forks, knife and various other things. पहले 1 महीना तो खा ही नहीं पाते, बिकॉज करेक्ट नाइफ, करेक्ट फोक ये यूज ही नहीं कर पाते. तो टाइम निकल जाता है, एंड इफ दैट टाइम इज ओवर यू कैन नॉट ईट. यू हैव टू क्लोज योर प्लेट एंड गो.
पहला 1 महीना लिटरली आप भूखे रहते हो. ओके, सो देयर आफ्टर यू learn everything. Okay, कैसे क्या करना. By the time you pass out of academy, आपको सब मालूम होता है क्या कैसे. आप 5-7 मिनट का 5 मिनट में ब्रेकफास्ट हो जाता है. तो दैट इज एकेडमी. तो एवरी डे हम लोग को शाम को चाय मिलती थी, चाय और पार्ले जी बिस्किट. एंड चाय और पार्ले जी बिस्किट के सिवा और आपको वो बोलते हैं ना जंक और कुछ नहीं मिलता था. शाम को पार्ले जी, कभी कभी मेरी बिस्किट और चाय आती थी. ऐसे एक कैंटर जैसे आता था और प्लेट में पार्ले जी. तो सारे जो कैडेट्स थे, हमारे जैसे जो कैडेट्स थे, everyone used to run for that पार्ले जी, और वो पार्ले जी ऐसे होता था, वही एक चीज खाने मिलता था अदर देन दी नॉर्मल लंच एंड डिनर एंड ब्रेकफास्ट. तो पीपल यूज्ड टू लिटरली रश एंड वो होता है ना जो सबसे ताकत वाला होता है वो जाके खाएगा टाइप. तो लाइफ वेंट ऑन. एक दिन ऐसे हुआ कि वो पार्ले जी के लिए सब 5:30 बजे जैसे शाम को पार्ले जी आया तो पीपल स्टार्टेड रनिंग देयर. एंड 12-13 लोगों पार्ले जी का ट्रे जब लिया, तब तक किसी के हाथ में पार्ले जी का टुकड़ा तो कभी चूरा, ऐसे सब आ गया. एंड बैड लक वाज दैट वो एकेडमी के जो हमारे इंचार्ज ऑफिसर थे तब वहां आ गए. एंड देन ही आस्क्ड कि क्या हो रहा है करके, व्हाई यू आर फाइटिंग. देन पीपल सेड नो, इट्स नॉट फाइटिंग बट पार्ले जी के लिए. देन ही वाज वेरी पिस्ड ऑफ. ही सेड कि पार्ले जी के लिए यू आर फाइटिंग, पार्ले जी. एंड देन हमारे ऊपर सीनियर होते थे, हम लोग जूनियर मोस्ट कैडेट थे, तो वी हैड 2-3-6 टर्म सीनियर, 6 और सीनियर टर्म के लोग थे. तो व्हाट ही डिड वाज, उसने हमें कुछ नहीं बोला. ही अनाउंस्ड दैट सारे के सारे एकेडमी जो मेरे स्क्वाड्रन वाले थे सभी लोग पनिशमेंट में आएंगे. एवरीवन विल कम इन अ पनिशमेंट ड्रेस. तो पनिशमेंट ड्रेस हमारे लिए पनिशमेंट ड्रेस अलग होता था. यू हैव टू कैरी योर बैटल ऑर्डर्स एंड उसके अंदर पत्थर रखा होता था 4-4 किलो का. यू हैव टू कम विद एवरीथिंग. एंड व्हेन वी ऑल वेर इन लाइन इन पनिशमेंट ऑर्डर, हम लोग जूनियर मोस्ट थे तो हमको उसने कुछ पनिशमेंट नहीं दिया. वी वेर ओनली स्टैंडिंग देयर. तो हमारे जितने भी सीनियर टर्म्स थे 4-5 टर्म, सभी लोग को पनिशमेंट दिया, उनको सभी लोग को. एंड ऑल ऑफ अस वे शॉक्ड कि व्हाई, जब हमने ऐसे किया तो इनको क्यों पनिशमेंट मिल रहा है. तभी वो लोग इतना उनको रगड़ दिया पनिशमेंट देके. दे वर लाइक some of them were actually bleeding on their elbows and other things. वो knuckle push-ups and everything. Then he said one thing. उसने उस दिन एक जो बात बोला, still that is with me. He said पार्ले जी is a very small thing, और इतने छोटे चीज के लिए आप सब लोग लड़ रहे हो करके, तो आपको जिंदगी में बड़ा देखना चाहिए, not about this small thing. At the same time, he said, even the small things are, valuable in your life. So you should value small things, but you should always aim bigger. इसलिए उसने, he said कि I have not given any punishment to your batch, but whereas I have given punishment to your senior batches. So फौज में we learned the first lesson कि whenever one is you value the small things. Okay, you value the small thing, but see the bigger things in life. ये नहीं कि पार्ले जी के लिए आप मारामारी करो. So that was the first lesson I learned that day on the leadership values. It was called value the small things in life, but see the bigger things in life. Okay, so ये पहला lesson था, first story of Parle Ji and Academy. So thereafter we went on, we passed out of Academy and we went on in various appointments. So we always remembered that. So we always used to see bigger picture in life. So this was the first story. Second story of leadership is कि जो leader होते हैं, आप हम सब leader है. By the way, all of us are leaders. कभी घर पे हम leader होते हैं, कभी दोस्तों में हम leader होते हैं, कभी ऑफिस में हम leader होते हैं, कभी क्लास में हम leader होते हैं. Everyone will go through that leadership situation. Yes, my second story is about a regiment in army. So army has got various regiments: Maratha regiment, Madras regiment, Assam regiment, you name any place, Sikh regiment. So
various regiment. So one of the regiment is Naga regiment. Okay, so Naga regiment is from Nagaland. Nagaland से है तो इसलिए they are called Naga regiment, and they are believed to be एकदम dangerous. They are extremely dangerous when they are in war or like situation. So after independence, जब Nagaland was proclaimed as a separate state, तभी army raised one battalion of Naga regiment. तो इनको फर्स्ट टाइम इनकी पोस्टिंग आई जम्मू एंड कश्मीर एरिया में, यू नो, क्लोज टू वेरी अर्ली. तो ये लोग जब बॉर्डर पे पोस्टिंग आती थी, इनका बटालियन केम देयर एंड दे यूज्ड टू बी वेरी साइलेंट पीपल. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ, दिस इज द लेसन वी विल लर्न फ्रॉम दिस. दे वर वेरी साइलेंट पीपल. और ये जब एलओसी में थे तो पाकिस्तान के एंड से, सो अदर साइड ऑफ एलओसी इज पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के एंड से हमेशा गोलीबारी चलती थी, काफी गोलीबारी चलती थी. एवरी डे शाम को दे यूज्ड टू फायर, दे यूज्ड टू पुट यू नो, बॉम्ब फेंकते थे, शेलिंग करते थे, ग्रेनेड फेंकते थे. बट दिस पीपल नेवर यूज्ड टू रेस्पॉन्ड. नागा रेजिमेंट वाले बहुत कूल रहते थे, एंड जितना ये लोग कूल रहते थे वहां से उतना उनको चिढ़ मचती थी कि ये लोग, हम लोग इतना कर रहे बट दे आर नॉट रेस्पॉन्डिंग ओनली. ऐसे दिन गए, महीने गए. And then after couple of months, they decided now enough is enough. अभी बहुत कर लिया ना, एक दिन हम जवाब देंगे, बट जिस दिन हम जवाब देंगे वो आखिरी दिन होगा. तो what they did, ये लोग एक पेट्रोलिंग में गए रातों रात, and they made a strategy, और वहां से 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को पकड़ के लाए यहाँ पर. They went inside, they came back with 3 soldiers. Okay, अब उसके बाद का मजा ये है. So जब सोल्जर्स को लेके आए तो दे वर शॉक्ड, इवन द सोल्जर्स वे, पाकिस्तानी जो सोल्जर्स है, दे वर आल्सो शॉक्ड कि हमें तो ला दिया बट ये लोग आज तक कुछ नहीं कर रहे थे, अभी सडनली 3 को पकड़ के लाए. एंड दे टाइड देम ऑन, वहाँ जो ट्री ट्रंक थे वहां पर बांध दिया उन तीनों को. एंड दे स्टार्टेड यू नो डांसिंग इन फ्रंट ऑफ देम, द नागा डांस, जो नागा रेजिमेंट का डांस. एंड इतना डरा दिया उनको, इतना डरा दिया. और साइड पे एक पानी का बड़ा बर्तन में पानी उबल रहा था, गर्म पानी. तो वन ऑफ द सोल्जर ऑफ नागा रेजिमेंट, ओके, कम्स एंड टेल टू हिज सीनियर ऑफिसर देयर कि जब वो देयर वाज दिस यू नो वाटर बॉइलिंग, तो उनके ऑफिसर को आके बोलते हैं कि सर ये जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं ये चिकन जैसा टेस्ट करेंगे तो इनको खाने में बड़ा मजा आएगा. एंड लेट मी टेल यू, दिस 3 सोल्जर्स वर सो शिट स्कैर्ड, इतना डर गए कि अभी ये लोग they will actually boil us and eat करके. So they were shivering. So then this senior guy, जो भी उनका जो ऑफिसर इंचार्ज था, he raises up, वहां से उठता है जहाँ बैठा होता है. He goes around the Pakistani soldiers, 3 of them, and then उनको इंस्पेक्ट करके ऐसे टच करके चेक करके बोलता है कि नहीं यार, ये लोग सब बहुत पतले लोग हैं, तो जब आप चिकन खाओगे तो चिकन का मजा मिलना चाहिए, तो इनमें वो मजा नहीं आएगा. तो ऐसे करते इनको छोड़ देते, 3 तगड़े लोगों को उठा के लाते हैं करके. So this became such a scary thing. उन्होंने कुछ नहीं किया. If you see the value chain, if you see the chain of event, 2 महीने तक they were very silent. ये लोग बॉम्ब करते थे. एक दिन गए, उठा के लाए, और एक दिन में इतना डरा दिया और उन्होंने 3 सोल्जर्स को वापस छोड़ दिए. And these 3 soldiers went back into the Pakistan battalion, और वो रोने धोने लग गए, बोले कि ये लोग अभी सबको उठाने वाले जो भी तगड़ा है करके यहाँ पर. And they get so scared. तो नागा रेजिमेंट के नाम से आज भी कांपते हैं वो लोग, you know. So that is the story, you know. That is the value you should take. So the value is you have to be calm, whatever situation. आपको एकदम शांत रहना है, लेकिन एक ही दिन बरसना है. जिस दिन बरसोगे उस दिन सब हिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एवरीडे वो लोग गोली मारते रहे, आप भी रिटर्न एवरीडे करते, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता. एक दिन ऐसे दो कि डर जाए पूरा. तो दैट इज व्हाट द कोर वैल्यू फ्रॉम दिस रेजिमेंट. ओके, so these are the 2 values.
So next story is about a very young officer, Major Mohit Sharma. He's Ashok Chakra. He laid down his life while fighting the terrorists. ये यूनिफॉर्म में डेकोरेशन देख रहे हो ना, probably he may be one of the highest decorated officer. फौजी तरस जाते इतना डेकोरेशन में निकले. So you have Sena medal, you have various gallantry medals, you have missile medals, tank medal, everything. You know, this is his para jumping medal, etc. And he's a commando. He, maroon cap है तो commando. So anyone wearing a maroon cap is commando. So इसकी स्टोरी, मेजर मोहित की स्टोरी से I'll tell you to learn the value of having daring to go all out. अब ये जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड थे, so he was very brave. So when he joined army, he was very clear कि इसको स्पेशल फोर्सेस में ही जाना है. स्पेशल फोर्सेस आर कमांडोज, ओके. तो he joined स्पेशल फोर्सेस. अब इसने जो काम किया वो सिर्फ यही कर सकता है. सो इफ यू आर इन आर्म फोर्सेस और एनीवेयर इन लाइफ, ऐसे अगर आपको अपॉर्चुनिटी आए एंड देन you have that value of doing something out of the box will only come to the leaders. इसने क्या किया, I'm sure all of us know कि कश्मीर में terrorism and counter insurgency operations are going on. So एक सडनली क्या होता है कि एक शोपियां बोल के जगह है, वहां पर लॉट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज. तो सडनली दो टेररिस्ट एक घर पे बैठे होते हैं, दोनों अपने AK-47 से दे आर क्लीनिंग इट एंड सीइंग इट अप एंड डाउन. तो उनके साथ वही रूम में तीसरा एक बंदा बैठा होता है. वो चुप बैठा होता है बट पूरे कश्मीरी ड्रेस में, एंड इज नॉट टॉकिंग मच. तब वो दोनों आतंकवादी उससे पूछते हैं कि तुम क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्या हुआ. एंड देन ही डजंट रेस्पॉन्ड. तो दोनों आतंकवादियों को लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, एंड दे आस्क हिम कि तुम कश्मीर के हो या तुम काफिर हो या क्या हो करके. तो देन दिस गाय ओनली सेज, मेरे भाई को आर्मी वालों ने मारा है और मुझे उनसे बदला लेना है. अगर तुम मदद करोगे मेरे तो बोलो, नहीं तो मैं अपना खुद देख लूंगा. एंड दिस आर दी टू ड्रेडेड टेररिस्ट. ये दोनों आतंकवादी एकदम टॉप के आतंकवादी थे वहां के. एंड डेज पास ऑन, 4-5 दिन निकल जाता है. 5वें या 6वें दिन फिर ये आतंकवादी दोनों को कुछ डाउट आता है, एंड देन दे अगेन आस्क देम कि इससे पूछता है कि वाकई में तुम कौन हो करके, तुम यहीं के हो क्या. And then he gets up and he says कि अगर आप लोग को मेरे फितरत या मेरे इस पे थोड़ा भी शक है तो मुझे गोली मार दीजिए. And after saying that, वो दोनों आतंकवादी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं. Within no time, this guy takes out a pistol from his shoe के socks में छुपाया होता है, and another weapon, और दोनों आतंकवादियों को वहीं पे उड़ा देता है. And this guy is मेजर मोहित शर्मा. ये आतंकवादियों के साथ 7 दिन रहा एज आतंकवादी बनकर. Nobody knows, and that was, he says, that was the only way to kill those 2 dreaded Atangwadis. Such was his daring. And then he comes back to his unit, and later, couple of years later, 3-4 साल के बाद, he gets fallen in line of duty. शहीद हो जाते हैं. आफ्टर 3-4 years इन आतंकवादी मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को गिरा के he gets hit in his head. One of the bullet hits his head, and then he passes away. So he was decorated with Sena medal. He was decorated with Shaurya Chakra, Ashok Chakra rather. So that is the story of Major Mohit. So the value which we take is that as a leader, you have to go all out, thinking out of the box. So this applies to all of us. हमको, whether you are student, whether you are looking up for your career, whether you are in corporate, anywhere. So this value stands out. So this is the story of Major Mohit Sharma. Third,
story is about, fourth story is about Captain Arya. His name is Captain Arya, Captain Pradeep Arya. Okay, he's a Shaurya Chakra. So now I'm telling you that he's an engineer. He's a MBA. He is a doctorate. He has cleared his IRS, Indian Revenue Services exam, IS exam होता है. He's working as a IRS officer. He's a IRS officer. Okay. And साल में 2 महीने ये आर्मी ट्रेनिंग में जाता है. It's called Territorial Army. He's part of Territorial Army. And he's a very top bureaucrat now. Income Tax Deputy Commissioner है Bombay. Additional Deputy Commissioner of Income Tax in Mumbai. Every year, 2 months he gets attached to army. Okay. And if you see the list of his qualification, even today he keeps on, adding some or the other degree to him. So one of the important lesson is that education is important. Education is only the thing which will take you far. So, and there is no age for education. आप कभी भी पढ़ सकते हो और जब तक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो. Education is important. There is no age to learning. Okay. Second thing is his passion to be with the armed forces. ये जब पहले इन्होंने 12 के बाद ट्राई किया था तभी नहीं हुआ था. So he went on. डिग्री के बाद वो पैशन रहा. डिग्री के बाद after he got selected to IRS, he appeared for Territorial Army. So Territorial Army, anybody who's a graduate and less than 42 years, 42 years is the limit, you can join Territorial Army. So after I started giving this storytelling on Facebook, at least 4 people are applying for Territorial Army. You know, I know 4 people applying for Territorial Army this coming September. So if you're 42 and lesser than that, you can apply for Territorial Army. So now Captain Arya, जब ये जम्मू एंड कश्मीर में थे, एक आतंकवादी मुठभेड़ के समय पर, he killed 4 आतंकवादी. He killed 4 आतंकवादी face to face, you know, and that's why he was decorated with Shaurya Chakra. Okay, and अभी भी ये मुंबई में posted है. He is there in Bandra Kurla complex में इसका ऑफिस है. Every year 2 months he goes with the army. तो इनके स्टोरी से ये मिलता है सीख कि एज इज जस्ट अ नंबर. नाउ इज 45 years old and education is important and there is no age to learning. Okay, so this is his story. The 5th story is about a person called Havaldar Nimbaram. Now he is a special forces commando. When you are in Kashmir and northeastern state of Nagaland, Assam, lot of terrorist activities happen there. So one such incident, special forces को पता चला 2013 में कि एक गांव में आतंकवादी घुस गए. So special forces के 8 लोग commandos along with their officer Lieutenant Colonel Arun, ये लोग they were told to go in that village. So जब ये वहाँ पहुँचे तो already आतंकवादियों की गोली चल रही थी. So now when you are in army and when आप जब कश्मीर जैसे जगह पे आप गांव में ये करने जाते हो, you have to be very very careful. And I'm sure you would be hearing lot of news कि लोग पत्थर वगैरह भी मारते हैं वहाँ के लोग, आर्मी को. Whatever reason, they are favorable to more to the terrorist, वहाँ के लोग. So you have to undergo everything. So ये जब पहुंचे वहां पर आतंकवादी गोली भी मार रहे थे और they had to take care कि एक भी सिविलियन को लगना नहीं चाहिए वहां पर. So this battle went on for 4-5 days, and finally on the last day they killed the 2 terrorists. और जब 2 terrorists को मार दिए, one of the terrorists fired and this Havaldar Nimbaram got 2 shots. One on his neck and one on his somewhere on his stomach. और जब ये गिरे तो बहुत जोर से एक पत्थर पे गिरे. Because of that उनका पेट फट के intestine came out, and his officer in charge and उसके जो बाकी साथी थे, they somehow evacuated him.
जब उनको इवैक्यूएट किया तो इंटेस्टाइन वाज आउट ऑलरेडी, so they somehow managed his intestine in some some they what they say is एक पॉलिथीन की जो थैली होती है उसमें इंटेस्टाइन को मैनेज किया. And there was also a doctor in that group, and he was taken into a ICU unit of a army hospital. अब जब वहां पहुंचा तो he was already unconscious, he was not able to speak, and जब डॉक्टर से नर्सेस से वहाँ उनके ऑफिसर ने पूछा कि क्या होगा इसका, सो नर्सेस वर सेइंग दैट, नर्स ने बोली कि ये शायद आधा घंटे में ही विल बी नो मोर, यू नो. एंड देन व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज रीच दैट हॉस्पिटल, जब वो वहाँ पहुंचे तो उसने सिर्फ ऐसे जोर से उनके बेड के बाजू में जाके he could see some movement in his eyes and lips, and then he asked कि निम्बाराम तुम कैसे हो. तो so what happens subconsciously commandos, ये उनके अफसर जो रहते हैं साथ में, so they gel as a team, you know. तो जैसे ही उनके अफसर का आवाज सुनाई दिया, निम्बाराम opened his eyes, and just imagine he's having a shot on his neck, और पेट में भी intestine is in a very severe state. Still he opens his eyes, and what does he ask first? सबसे पहला क्या पूछता है पता है? सबसे पहला वो पूछता है कि साहब बाकी के मेरे सभी जो फौजी साथी वो कैसे हैं, किसी को कुछ लगा कि नहीं? I hope everyone is all right, you know. See the guy who's shot, और वो अगले आधा घंटा 1 घंटे में probably he may not be there, but in spite of all those hardships and what he has undergone, he's asking about his team. How's my team, you know? So that is what the values which armed forces teach you. So the value is the teamwork. The teamwork, maybe slide में थोड़ा गड़बड़ है. Teamwork is very, very important. Whatever professional area you go, whether you go in armed forces or not, whether you go in corporate, whether you go in teaching, is all about teamwork, you know. Individually you may soar, आप prime minister बन जाओगे, लेकिन it's all about team. So this story of Havaldar Nimbaram teaches you the importance of teamwork. And later he's come to his death, you know. उसी दिन शाम को he passed away. So this is the story of brave Havaldar Nimbaram. And then these are the various stories and various values you can take through. Now I'll tell you something on the power of belief, you know. So this photo is me at the as Vishu said, this is at the finish line of Comrades, which is 89-kilometer race in South Africa last year, 2019 June. So it's called power of belief, you know, because I believe that anybody of us, जो हम लोग जो आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, all of us should have the power of belief. अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, ये सबसे बड़ा वैल्यू है. If you don't trust yourself, फिर भगवान भी आपको कुछ नहीं कर सकता. If you believe कि भगवान मुझे सब मेरे लिए सब कुछ करेगा या पेरेंट्स सब कुछ करेगा और आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा लाइफ में. So there is something called power of belief and power of visualization. The power of belief is that when you believe that you will do, so it will happen. You know? फिर वो बोलते हैं ना, पूरा कायनात एक हो जाता है सब कुछ ठीक करने के लिए. That is the power of belief. So in South Africa, as Vishu will know and Gaurav will know, so I am a very slow runner. I run for fun and this thing. But then when I got a chance to do Comrades, many of them thought I may not complete 89 kilometers. But being a Fauji and you know, when I analyzed everything, so I knew that I will do it. That was the power of belief. So when you have that power of belief, जब आपको लगते हो कि आप करोगे, तो one is positive attitude, second is you will work for it. आप मेहनत करोगे वहां तक ये करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं. It's not to show anybody, but it's to prove to you that yes, I have that belief that I will do.
जैसे कि आपको अगर एग्जाम्स में अच्छे नंबर आना है या यू हैव टू टॉप समथिंग, इफ यू बिलीव दैट यू विल एंड यू विल वर्क टुवर्ड्स इट. ऐसे नहीं कि बिलीव करके छोड़ दोगे, ऐसा नहीं. You have to work towards it. So the power of belief was so strong, and throughout that journey of training of 4 months, I believed that I will finish, and I will finish in same dress. That too also I visualized 3 months earlier. ये इंडिया का टी-शर्ट होगा, ये इंडिया का फ्लैग हाथ में होगा, and you know I love to wear tricolor wherever I go. So that was the power of belief. And there were so many good athletes, much faster runner than me. Many of them couldn't complete because probably somewhere that negativity creeped in, you know. जब भी आप सोचोगे, एक भी नेगेटिव चीज सोचते हो ना कि मुझसे नहीं होगा, तो everything, all the cells in your body combines to ensure that it will not happen. Okay, so if you believe hoga, तो every cell in your body will align to make it happen. So that was the power of belief which I had during this particular event in South Africa, and then I could complete that race in the stipulated time in 11 hours 48 minutes something. So that summarizes the power of belief. So these are the 5-6 stories which I told you. These are the values which armed forces taught us. These are the values you will find in each of the person who are from the armed forces, whether he's a soldier, whether he's an officer. जब ये एकेडमी में जाते हैं, उनके अंदर ये पूरा ड्रिल किया जाता है कि बॉस तू ऐसे ही जिएगा करके. एंड that's why आप जब देखते हो ना, जब न्यूज सुने होंगे 4 दिन पहले कि 4 लोग शहीद हो गए, 5 लोग शहीद होने से कोई नहीं कतरा था, मरने से कोई नहीं कतरा था, और मारने से कोई नहीं कतरा था. That is what is Indian Armed Forces. So कर्नल आशुतोष शर्मा, जो 5 दिन पहले जिनका शहीद हुए थे, he cleared his entrance to army CDS. He is a CDS entry. 13th attempt में वो SSB क्लियर हुए थे. 13th attempt 1-3 लास्ट अटेम्प्ट था उनका. He tried because बचपन से उनकी ख्वाहिश थी कि आर्मी ज्वाइन करना और कुछ नहीं. 13th attempt he cleared. He's 1 batch junior to me. 13th attempt he cleared and he joined army, and he was so brave. अभी उनका डेथ हुआ यहाँ पर हंदवारा में. He has got 2 army gallantry medals पहली, and he was one of the most decorated officer. And when he died other day, he was a colonel, CEO of that unit. You know, CEO leader होके आगे से he was facing the terrorist point blank. You know, being a leader and being there. So everyone in the armed forces, whether Navy, Army, Air Force, everyone is molded into that. And it is not about Army, Navy, Air Force. If all of us think that we can take all these values, so whatever sphere of life we are, all of us are capable. Okay, so all of us are capable. So you have this power of belief, the power of teamwork, the power of daring, the power of seeing bigger things in life, and then फिर तो बस आसमान ही आसमान है, चांद तारे सब कुछ. So this is what is the value which I thought I will share with you all. Being from the armed forces, this is what happens there, and each and every one of us are like that. Okay, so open to questions now. Yeah, before we start with the question answer session, I'm sure many of them will have something to ask. I tell you, it was a wonderful listening. Vijay, no second thoughts about your quality of storytelling. It kept everyone gelled, I'm sure. And if you look at the number of participants in the group, it touched up to 50. थोड़ा नेटवर्क इशू शाम को चालू हो जाता है, ऑन एंड ऑफ लोग आ रहे जा रहे, बट एवरीवन इज ग्लूड. मेरे आजू बाजू में तुम देख रहे हो तो 2 they are also like crammed into space, but still. Yeah. I know, right? So technology, I always tell whenever I take a Zoom session to my office and all, we are invading their space, space we are invading. So when they shout and this thing, we should not feel bad because आप उनका space ले रहे हो. So that. Hi Vijay, तेरे को भी देख रहा हूँ मैं. Thank you so much, Vijay. Yeah, Vijay. Hi, Vijay. Vijay, would you like to ask something? No, nothing from my end. Okay. Yeah, boys, girls, open to you.
You can ask your questions, anything related to Fauji. One of my students who is already attempting for getting into Fauj is Aditya Kanodia. Okay. He's in there. Aditya, if you can unmute yourself. Beta. Aditya. Adi.